All right. Hello, good evening, and welcome back to a brand new series where we'll cover different concepts of logical reasoning and practice some questions. The name of the series is Back to Basics, and today is the first session of this particular series. We are starting with a topic which we have done once before, but because it's a new start, we'll look at the concept again. We'll look at the introduction to syllogisms. Now, syllogisms is a topic which is asked in almost all the entrance exams. CLAT used to ask it for a very long period of time, but from the past 2 3 years, we have not seen questions on syllogisms, but we had also not seen questions on circular reasoning puzzles. So there could be a surprise in the CLAT exam as well. But when you talk about the ALET exam or the SLAT exam or the MHCET exam, you definitely find some questions of syllogisms there. तो आज की क्लास में विल सी सिलॉजिज्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, सिलॉजिज्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं. सम पीपल फाइंड इट टू बी ट्रिकी एंड complicated, but they are pretty easy and simple to understand once you know the concepts well. So let's not waste any further time and begin our topic of syllogisms for the day. Now, when you talk about what exactly are syllogisms, so syllogisms are a type of deductive reasoning. What do we mean by deductive reasoning? Deductive reasoning is something where you have specific conclusions flowing from multiple premises. Now, for this, you need to know that a logical argument has two important components. One is a premise and one is a conclusion. Now, premise is simply your statements which contain facts, information, details, numbers, statistics. And what do these facts help you do? These help you reach the conclusion, which is the point which the author is trying to prove, which the author is trying to establish. So, to give you an example of a logical argument, if I say that I study every day for the CLAT exam, therefore I will have a better chance of cracking it. Here, when I say I study every day for the CLAT exam, that is a fact. And the conclusion is I will have a better chance of cracking it. Simple. So, what is syllogisms? Syllogism is a form of deductive argument where the conclusion follows from the truth of two or more premises. Premises are your facts, and conclusion is your final deduction which you reach based on those facts. ठीक है कि किसी फैक्ट से हमें क्या पता चला या क्या एस्टैब्लिश हुआ. Now, how syllogisms are different from our traditional questions of critical reasoning is we use a thing called Venn diagrams to solve questions of syllogisms. Now, what are Venn diagrams? Some of you might have seen these in your schools or in your syllabus of maths when you studied it in school. Venn diagrams, as the name suggests, are a type of diagrammatic or graphical representation where you establish relationship between two statements. So an example, we'll look at multiple examples of Venn diagrams, but before we look at what are Venn diagrams, there is another way to solve questions of syllogisms, which is some people call it the yes no method, some people call it the plus minus method, some people call it the true false method, which where you test multiple conditions and multiple possibilities and then check whether the conclusion would follow or not. It's a complicated you could say method to do a very simple thing. So I personally prefer the Venn diagram method, and I would recommend and suggest that you guys also follow the Venn diagram method. Although you are free to follow this method as well if that is what you prefer. I'm not going to stop you, but my personal preference is the Venn diagram method, and we'll study that in today's class as well. Now, first of all, let's understand what do questions in syllogisms look like. So your questions would somewhat look like, let's say you would have two statements, right? Two premises. Let's say one statement says that some apples are oranges. And the second statement says that some cats are dogs. Okay. So you have two premises, two factual statements. And on the basis of these statements, you would be given multiple conclusions. Let's say the first conclusion which you have to test is some oranges are dogs. You would have to tell whether this statement is true or false, whether this conclusion follows or not, whether this conclusion is valid or not. So you would draw a diagram for this statement and a diagram for this statement and check based on that diagram whether this conclusion would follow or not. Right now, you might be wondering, how can apples be oranges or how can cats be dogs? This is how things work in syllogisms. You could just call them A and B. These are variables. These can have any names,
and they don't really have a real world connection. यानी कि एप्पल्स कैन बी ऑरेंजेस, एप्पल्स कैन बी फ्रूट्स, एप्पल कैन बी वेजिटेबल्स, जो भी क्वेश्चन में लिखा है अज्यूम कि वो सम ए आर बी है या ऑल ए आर बी है, उसको ए और बी मानो, उसको रियल वर्ल्ड एप्पल्स या ऑरेंजेस या कैट्स या डॉग्स मत मानो, वरना यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो आप इनको. ठीक है, now that we have understood what types of questions are asked in syllogisms, let's look at the type of variations in these questions, be it the premises or the conclusions. सबसे पहली कंडीशन जो हम समझते हैं इन सिलॉजिज्म्स, एंड द सिंपलेस्ट वन इज सम ए आर बी. नाउ ए एंड बी की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो. सम रिमोट इज मोबाइल, सम वाटर इज परफ्यूम, सम लैपटॉप इज बेडशीट, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? There has to be no logical real world connection between those two items. So we call it sum A R B. तो sum A R B का जो हम Venn diagram बनाते हैं, जो हम उसको represent करते हैं, we first draw a circle which represents A, then we draw another circle which represents B and is overlapping with A. So this part which you see is the part which indicates that sum A R B. That means some part of A overlaps with some part of B. कुछ part हमारे बीच में common है इन दोनों A और B के बीच में. It could be some dogs or cats. So if it's some dogs or cats, this would be dogs, this would be cats. Simple as that. So this is how you draw a diagram, right? Now, when you talk about what conclusions follow based on this particular possibility, it's very simple to understand. See, let's check. When I say sum A or B, can I conclude from this that sum A are not B? Now, in normal terms, you would think that this should be a valid conclusion, है ना? अगर हम कह रहे हैं कि sum A B है, तो इसका मतलब कुछ A ऐसा है जो B नहीं है, वरना हम यही कह देते कि सारा A B है. But that is not how it works in logical reasoning in terms of syllogisms. When we say sum A or B, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1A is B. That means 1% of A is B. It could also mean 20% of A is B. It could also mean 100% of A is B. तो आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि जब सम ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सम ए आर नॉट बी भी ट्रू होगा. इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर श्योर, बट इट इज नॉट अ वैलिड फॉर श्योर कंक्लूजन कि सम ए आर नॉट बी. सिमिलरली आप ऑल ए आर बी भी वैलिड कंक्लूड नहीं कर सकते एज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस. इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सम ए आर बी का मतलब 100% ए इज बी भी हो सकता है, यानी कि दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट दिस इज नॉट अ जनरल कंक्लूजन. So the only general conclusion which would follow from sum A or B is going to be sum B or A. ठीक है, अगर कुछ A B है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ B A है. The reverse can be said in the sum condition. ठीक है, और क्या आप कह सकते हो no A or B? क्या आप कह सकते हो कोई भी A B नहीं है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि एटलीस्ट 1% तो A है जो B है. देयर इज एटलीस्ट 1% ओवरलैप, है ना? सो आपका ये जो ओवरलैप है A एंड B का, ये ऐसा सिर्फ 1% भी हो सकता है, ये ऐसा लेट से ऑलमोस्ट 20% भी हो सकता है, और ये ऐसा 100% भी हो सकता है, एक के ऊपर एक. So this would also be a possibility of some A or B where there is 100% overlap. But this is a possibility. Remember, the all condition, all A or B is a possibility. It's not a general sort of conclusion. Okay. So this is how you work around some A or B. That is the first condition. Now the second condition, no A or B. कोई भी A B नहीं है, इसको आप कैसे represent करोगे? How would you put it on a Venn diagram? So you first draw a simple A as a circle, you draw a B as a circle, and you show an arrow or a bridge and say no connection can happen. You draw a cross over it. That means no part of A can overlap with B. None of A can merge with B. A और B का मेल मिलाप नहीं हो सकता. ठीक है? Now, what are the conclusions which follow from this particular condition, no A or B? The first conclusion which would follow would obviously be, let's say, some A are not B. This is a valid conclusion. अगर कोई भी A B नहीं है, तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि कुछ A B नहीं है ना? That is a valid conclusion. Can we say that some A are B? नो, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी ए बी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ए बी हो जाए. दिस कैन नॉट बी ट्रू. कैन बी से ऑल ए आर बी? ये तो हम बिल्कुल ही नहीं बोल सकते. अगर हम नो ए आर बी कह रहे हैं तो ऑल ए आर बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? एंड दिस इज हाउ कंक्लूजन्स फॉलो फ्रॉम नो ए आर बी. वेरी सिंपल. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको कि कैसे यू ऑपरेट ऑन दीज कंडीशंस. द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑल ए आर बी. So how do you draw all A or B? You draw an A and all of A lies within B. That means you draw a B around it. All of A comes within B. All A are B. Okay, this is how you draw all A or B. Now, when you say all A or B, you can for sure say that at least some A or B. So some A or B is a valid conclusion. But can you say some A are not B? No, you cannot. है ना. आप ये नहीं कह सकते कि कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारा का सारा ए बी के अंदर है. देखो पूरा ए लाइज विद इन बी. आपको कोई ऐसा हिस्सा दिख रहा है ए का जो बी के अंदर नहीं है? नो, दिस कैन नॉट बी ट्रू. एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से दैट नो ए आर बी. वी कैन सी दैट ऑल ऑफ ए लाइज विद इन बी. ठीक है. So this is how the third condition operates. Now let's move to the fourth condition, which is only a few A are B. Now you might think कि अभी हमने देखा some A are B, which means कुछ A B हैं. अब यहाँ पे लिखा है only a few A are B. इसका मतलब भी कुछ A are B है? नहीं. इसका मतलब कुछ A are B नहीं है. इसका मतलब है कुछ ही A हैं जो B हैं. There are only a selected few A which are B, and the rest of them are not B. नाउ हाउ डज दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम सम. इसमें आपकी जो सम नॉट वाली कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी. देखो हम इसको ड्रॉ वैसे ही करते हैं एकदम सम ए आर बी की तरह, ए एंड बी, बट वी शेड और हाईलाइट दिस पर्टिकुलर रीजन to indicate that only this portion, only this highlighted part is the overlap between A and B. That means this all part cannot even possibly be overlapping with B. So यहाँ पे आपकी जो possibility होती है ना कितना परसेंट A B हो सकता है, वो 1 से लेके 99 तक होती है. कि एटलीस्ट 1% ए बी हो सकता है, एटलीस्ट 20% ए बी हो सकता है, और 99% ए भी हो सकता है. लेकिन सम की तरह 100% ए बी नहीं हो सकता. यानी कि आपका ये जो ओवरलैप वाला बनता है ना कंडीशन, ऑल ए आर बी वाला, वो ट्रू नहीं हो सकता. कुछ ऐसा एटलीस्ट 1% ऐसा ए है जो बी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. दैट इज वाई वी से ओनली अ फ्यू. सिर्फ कुछ ही ए बी है, मतलब कुछ ना कुछ ए तो ऐसा है जो बी नहीं बन सकता. So looking at the conclusions which would follow when you say all A are B, that would be false. And all A are B as a possibility would also be false. उस वाले में possibility true थी, remember some A are B में, यहाँ पे possibility भी नहीं है. Then some A are B would be true, क्योंकि अगर कुछ A B हैं तो some A are B हम बोल सकते हैं. Some A are not B would also be true, क्योंकि हमें पता है कि एटलीस्ट 1% ए ऐसा है जो बी नहीं होगा. सो सम ए आर नॉट बी वुड ऑल्सो बी ट्रू. लेकिन जो हमारी सम वाली कंडीशन थी सम ए आर बी, उसमें सम ए आर नॉट बी इज नॉट अ ट्रू कंक्लूजन. सो दैट इज द डिफरेंस, राइट. एंड नो ए आर बी अगर हम बोले तो दैट वुड बी फॉल्स. बट वुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी? नो, नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एटलीस्ट 1% ए तो है जो बी होगा. सो नो वाला फॉल्स हो जाएगा, ऑल वाला भी फॉल्स हो जाएगा. सम ट्रू होगा, सम नॉट भी ट्रू होगा. ठीक है. So this is the fourth condition. Let's move to the fifth condition, which is only A or B. अब आप बोलो सर अभी हमने only या few देखा, अब only कैसे फर्क है? Only में हम एक चीज करते हैं where we flip the condition and write it as all B are A. Why do we flip it and write it as all B are A? इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं ना. ऐसे थोड़ी हमने ओनली A आर B को पलट के all B are A कर दिया. B इधर ले गए, A उधर ले गए और all कंडीशन लगा दी. अब all का हमें पता है कि कैसे बनता है डायग्राम, बट यहाँ पे जो all B are A है दैट कम्स विद अ कंडीशन. सो आप इस पे एक स्टार लगा लो. ठीक है, वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि पहले आपने B बनाया और B के अराउंड आपने A बना दिया, बिकॉज all B are A. But there is a condition. We'll talk about the condition. But let's first understand कि only A और B convert होके all B और A कैसे बन गया. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे. Let's assume there are two classrooms. Classroom number 1 and classroom number 2. ठीक है. क्लासरूम 1 में सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं एंड क्लासरूम 2 में सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं. सारे क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं लेट्स से ब्लू जर्सी पहनते हैं एंड सारे फुटबॉल प्लेयर्स लेट्स से ब्लैक जर्सी पहनते हैं. These are the facts which we know. अब अगर मैं बोलूं कि only A or B को इसका हम इसमें अप्लाई करें तो कैन आई से only, if I say only cricket players wear blue jersey, okay, only cricket players wear blue jersey, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि
all the blue jersey wearers or everyone who is wearing a blue jersey is a cricket player? ऐसे हम बोल सकते हैं कि जितने लोगों ने ब्लू जर्सी पहनी है वो सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं। अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स ही ब्लू जर्सी पहनते हैं तो सारे ब्लू जर्सी वाले क्रिकेट प्लेयर्स हो गए। यहाँ पे भी देखो, इफ आई से दैट ओनली फुटबॉल प्लेयर्स वेयर ब्लैक जर्सी, कैन आई से एवरीवन हु इज वेयरिंग अ ब्लैक जर्सी इज अ फुटबॉल प्लेयर? Yes, I can very well say this. So this is how we convert this situation to draw its Venn diagram, and only A or B gets converted to all B or A. Okay, but remember there has to be a condition. What condition? When you draw a converted all B or A, this B cannot associate with anyone else, so you draw a boundary wall around it. इसका मतलब ये है कि ये वाला बी किसी और अदर वेरिएबल लेट से सी के साथ एसोसिएट या ओवरलैप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है ना। हमने देखा था कि अगर सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स ब्लू जर्सी पहनते हैं तो सारे ब्लू जर्सी वाले क्रिकेट प्लेयर्स ही होने चाहिए। अगर ब्लू जर्सी वाले किसी और के साथ भी एसोसिएट हो गए तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई this condition or this star mark, and this is how you draw it. You draw a boundary or a spike around B which suggests that this B cannot associate with anyone else now. Okay, so आपका डायग्राम ऐसे बनेगा only A or B का। You draw a B, you draw a boundary around it, and you draw an A. Okay, this is how the condition works. नाउ बाकी सारे रूल्स इसमें ऑल ए आर बी वाले ही अप्लाई होंगे। जैसे आपने ऑल ए आर बी के रूल्स बनाए थे वैसे ही ऑल बी आर ए बना लो यहाँ पे। सो यहाँ पे सम बी आर ए वुड बी ट्रू एंड आपका नो बी आर ए वुड बी फॉल्स एंड सम बी आर नॉट ए वुड ऑल्सो बी फॉल्स। ठीक है, तो रूल्स वही वाले हैं, बस ये कंडीशन है कि बी किसी और के साथ एसोसिएट नहीं होगा। नाउ देयर इज वन लास्ट कंडीशन विच इज सम ए आर नॉट बी। What is this condition? This is very simple. जैसे हमने सम ए आर बी बनाया था उसी तरीके से बनाते हैं। पहले हम ए बनाएंगे, उसका एक हिस्सा हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड सिर्फ इस हिस्से को हम मार्क कर देंगे एज अ नॉट वाला कंडीशन। जैसे हमने ऑल ए आर नॉट बी कैसे बनाया था, हमने ए बनाया था और फिर एक नॉट वाला ब्रिज बना के ऐसे बी बना दिया था। तो अगर सम ए आर नॉट बी दिखाना है तो ओनली सम पार्ट ऑफ ए कैनॉट ओवरलैप विद बी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट, दैट सम ए आर नॉट बी। सिंपल। ठीक है, इसमें कंडीशंस वैसे ही फुलफिल होंगी। अगर आप कंक्लूजन्स की बात करो तो व्हेन यू से सम ए आर नॉट बी, कैन यू से सम ए आर बी? नो, यू कैन नॉट। जैसे सम ए से सम नॉट नहीं कंक्लूड कर सकते वैसे सम नॉट से सम भी कंक्लूड नहीं कर सकते। बट कैन दिस बी अ पॉसिबिलिटी? यस, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। नाउ व्हेन यू से नो ए आर बी, can we conclude that as a general conclusion? No. But can we conclude it as a possibility? Yes. क्योंकि अगर कुछ ए बी नहीं है तो ये अगेन 1 से लेके 100 तक जाएगा कि 1% ए बी नहीं है, 40% ए इज नॉट बी, 80% ए इज नॉट बी, एंड इवन 100% ऑफ ए कैन नॉट बी बी। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट नो ए आर बी 1 से लेके 100 तक। ओके, नाउ व्हेन यू से दैट सम ए आर नॉट बी, दैट वुड बी अ ट्रू कंक्लूजन, क्योंकि वो तो लिखा ही है ऊपर। चलो, सम बी आर नॉट ए, वो भी आप नहीं बोल सकते। ठीक है, so this is how your 6 conditions operate, right? You have some A or B like this, then you have no A or B like this, then you have all A or B like this, then you have only a few A or B like this, then you have only A or B which gets converted to all B or A with a condition which you draw like this, all B or A, and then there is some A or not B like this. So these are the 6 primary conditions which you look at in syllogisms, and इन्हीं के basis पे आपके सारे questions frame होंगे। इसके beyond आपके questions नहीं आएंगे। So let's now look at some of the questions and try to solve them. एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। So इस type के questions आपके पास आते हैं। Some actors are singer. Let's draw it. You draw actors, then you overlap it with singers. Some actors are singers, some A or B, ऐसे बनाया था हमने। Then all singers are dancers. तो ये रहा हमारा singers, and all singers are dancers। तो हम इसके अराउंड एक dancers बना दे। अब आप बोलो कि ये वाला आपने कैसे assume कर लिया ओवरलैप होगा, तो हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। तो हम all singers are dancers बनाएंगे, इसके अराउंड ऐसे 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 dancers बना लेंगे, क्योंकि हमें dancers और actors का relationship अभी इतना नहीं पता। ठीक है, so this is how we draw an all around dancers. Now let's look at conclusion. Some actors are dancers. कुछ actors dancers हैं। Simply diagram देख के check करो, क्या कोई actor है जो dancer के अंदर आ रहे हैं? हाँ, देखो ये वाला region dancer के अंदर भी आ रहा है। So true conclusion.
नो सिंगर इज अ एक्टर, कोई सिंगर एक्टर नहीं है, नहीं देखो ये ओवरलैप है, ये सिंगर्स एक्टर्स हैं, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, so some singers are actors, so this would be false conclusion, which means only first conclusion follows, and that is why the first option becomes the correct answer. I hope that makes sense. Let's move to the next question. All the harmoniums are instruments. ठीक है, हारमोनियम्स बना लिया, उसके अराउंड इंस्ट्रूमेंट्स बना लिया. ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के अराउंड हमने फ्लूट्स बना लिया. ठीक है, लेट्स चेक. ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स. क्या सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं? नहीं, देखो ये वाले जो फ्लूट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर थोड़ी ना है, सो ये गलत हो जाएगा. ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स. क्या सारे हारमोनियम्स फ्लूट्स हैं? हाँ, सारा का सारा हारमोनियम इज विद इन फ्लूट्स, सो दिस वुड बी करेक्ट. So that means option number B, only 2 follows as a valid conclusion. Simple. Let's look at some more questions. Some dogs are bats. Okay. Some dogs are bats. Some bats are cats. Okay. Some bats are cats. Cool. Dogs are bats. Bats are cats. Some. अब इस पे कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट्स. कैन वी से सम डॉग्स आर कैट्स? डू वी हैव अ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स? नहीं, हमें नहीं पता कि ओवरलैप है कि नहीं है. So this would be wrong. Some cats are dogs. Again, dogs and cats का नहीं पता तो cats and dogs के बीच का भी नहीं पता. This is cats, this is dogs. We don't know. So none of the conclusions are valid. So that means neither one or two follows. Okay. All right. Let's do question number 4. All buildings are chalks. Okay. So we draw buildings. All buildings and all buildings are chalks. No chalk is toffee. So chalks cannot be toffee. So none of the thing which lies between chalk, within chalk, can be toffee. Okay, now conclusions. No building is a toffee. No building is a toffee. That's true. If no chalk is a toffee and building lies within chalk, then no building can be a toffee. Correct. All chalks are buildings. All chalks are buildings. Is that true? No. Look at these chalks. ये buildings के अंदर थोड़ी ना है. So ये गलत हो जाएगा. All buildings are chalks, but all chalks are not buildings. So only first one is true, which means only one follows. Okay, let's look at one last question before we end today's class, and then you guys can practice more questions of syllogisms on your own. Let's see. Some cats are rats. Some cats are rats. All bats are tables. Okay, so new variables. All bats are tables. All rats are bats. All rats are bats. Okay, interesting. So we'll have to draw it in a different way. All rats are bats हम ऐसे बनाएंगे, and all bats are tables फिर हम ऐसे बनाएंगे. So this is the diagram which we'll look at. ये वाले को आप इग्नोर कर दो. ठीक है, so अब इसमें सारे हमारे बन गए ना. Some cats are rats बन गया, all bats are tables बन गया, and all rats are bats बन गया. इसको एक बार फिर से बना लेते हैं. Some cats are rats. ठीक है, पहले ये वाला बनाएंगे. ऑल रैट्स आर बैट्स, तो रैट्स के अराउंड चलो मैं एक बैट्स बना देता हूँ. ऑल रैट्स आर बैट्स. अब ऑल बैट्स आर टेबल्स, तो बैट्स के अराउंड मैं एक टेबल्स बना देता हूँ. The last one is tables. Cool. Now let's look at conclusions. Some cats are bats. Some cats, हाँ देखो बैट्स के साथ ओवरलैप हो रहा है, so this is true. All bats are rats. All bats are rats. Now you can see these bats which are not within rats. So wrong. All tables are cats. All tables are cats. No, these are the tables which are not cats. So wrong. All bats are cats. All bats are cats. This is again wrong. So only the first one follows. मैं कुछ गलत तो नहीं किया. All bats are cats is wrong. All tables are cats is wrong. All bats are rats is also wrong. Some cats are bats is true. हाँ, so सिर्फ पहले वाला सही है. Only first follows, which means none of these is the correct option. Option number 4. Only the first conclusion is valid. Okay. So that brings us to the end of this first class of Back to Basics series. In the next class, we'll practice some difficult questions of syllogisms. And I would appreciate that you revise your concepts before you come for the next class, and also practice some questions on your own. We'll do syllogisms part 2 in the next session, and I'll see you there next Wednesday, same time at 8 p.m. in the video section. Till then, take care, keep learning, keep preparing. Signing off.